Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss the current electricity JEE Main 2024 PYQ, the April shift. Again, the current electricity, the most essential topics are galvanometer, conversion of galvanometer to ammeter, voltmeter, meter bridge, iron Wheatstone network, then power dissipation, bulbs, kettle, series, parallel. You see all the and variation of thermal resistance, temperature quotient of resistance, alpha, temperature quotient of resistance. Okay, you have to avoid those problems where many circuits are there and they'll ask you to find out effective. Many resistance are there, very tough, lengthy. Some equations will apply, then we'll get the resistance. Those things you have to avoid. Leave those questions and focus on this one. Conversion of galvanometer to ammeter, voltmeter, then application problems, meter bridge, Wheatstone, power dissipation, bulb series parallel, kettle series parallel, heater coil, uh, power rating of heater, power dissipation, power rating of bulb. Next, series parallel, finding effective resistance, current divider, voltage divider formula, series parallel. Next, temperature quotient of resistance. Your entire current electricity past 10 years revolving around these ideas only. And in a very less time, you can revise all this. Very less theory is there. Even you have a time, so sit, revise all these things. So ये सब पढ़ना है एक बार. अगर एक बार आप पढ़ के रिवाइज करो, बाद में फॉर्मूलास याद करो, देन यू वेरी कॉन्फिडेंटली आप प्रीवियस PYQ सॉल्व कर सकते हो. So I'll start with the question. The number of electrons flowing per second in the filament of a 110 watt bulb operating at 220. इसमें कितने करंट फ्लो हो रहा है? Is asking about the flow of current. So power rating of the bulb, यहाँ पे बल्ब ले लेंगे, कितना वोल्टेज है, ऑपरेटिंग है 220 वोल्ट, वोल्टेज अप्लाई कर चुके हैं, इसका पावर रेटिंग है 110 watt. And for the bulb, what we can write? We can write it as P equal to V square by R. इसका पावर हुआ 110, 220 volt whole square by R. R equal to 22 into 22 into 100 by 110. यहाँ पे एक जीरो कैंसल हुआ, देन यहाँ पे 11, यहाँ पे 2, सो कुल मिला के 440 ओम रेजिस्टेंस है. कितना वोल्टेज अप्लाई कर चुके हम? 220 वोल्ट. सो व्हाट इज द करंट? यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इज इक्वल टू आई इक्वल टू 220 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज, करंट इक्वल टू आई इक्वल टू V by R. V का वैल्यू 220, रेजिस्टेंस 440, 0 0, यहाँ पे 2, 0.5 एम्पियर. इस 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड? आई इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड चाहिए बोले तो करंट बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो करंट का वैल्यू कितना है? 0.5. इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19, 5/16 इंटू 10 टू पावर ऑफ 19, करीब 5/16 का वैल्यू. 5 डिवाइडेड बाई 16,
0.3125 into 10 to the power of 19. 31 2.5 into 10 to the power of 17. इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं. अगला क्वेश्चन लेंगे. The value of unknown resistance for which potential between B and D will be zero in the arrangement shown. Between B and D, B यहाँ पे है and D यहाँ पे, इसका potential difference zero. इसके होने के लिए is asking the resistance X. Resistance X कहाँ पे है? This one ना, यहाँ पे resistance है. तो what is the Wheatstone network? ये दोनों 12 ohm 12 ohm, ये दोनों series effective will be in parallel with this. यहाँ पे हमें resistance कितना मिलेगा? यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे. इसका 24 यहाँ ले लो. 12 + 12 24 और ये दो 24. ये सब यहाँ पे दे आर इन effective of this branch. How much it will come? ये तो हुआ 6 ohm. सर कैसे 6 ohm? 12 सीरीज, इसका कुल मिला के 24 हुआ. 24 पैरेलल टू दिस 24 विल बी 12. ओके फाइन. यहाँ पे हम इसका वैल्यू हुआ 12 ohm. ए तो हुआ बी ए डी सी. इसका 1 ohm है, 1 ohm है. तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? ये तो हुआ 0.5 ohm. ये तो ऑलरेडी दे गिवन 0.5 ohm. यहाँ पे 12 इफेक्ट विल बी 6 प्लस x. अननोन. सो ए वाला हुआ 12 तो 0.5 6 plus 6. Total for potential VBD to be 0. 12 by 0.5 is equal to 6 plus x plus 0.5. तो x का वैल्यू हुआ 6 ohm. A simple idea of Wheatstone network. अगर आपको Wheatstone network पता है, you can manage a series parallel. And that's what my पिछले 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ. लाइक आप Wheatstone network series parallel, लाइक सेल के बारे में थोड़ा बहुत, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, KCL KVL, जस्ट बेसिक्स. एक कम समय में आप ये सब बेसिक्स पढ़ सकते हैं. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The value of resistance R and radius stretched till it becomes radius R by 2. New resistance of stretched wire is X R, the value of X. यहाँ पे हम एक वायर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. इसका रेडियस कितना हुआ? R. इसका रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R. इसका लेंथ L और इसका रेजिस्टिविटी लेट इट बी रो. ये जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू रो L बाय पाई R स्क्वायर. हम इसको स्ट्रेच करेंगे. इस रेडियस बिकम्स R by 2. देन जब इसका रेडियस कम हो जाएगा, देन द लेंथ हैज टू इंक्रीज. और टोटल वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो इट विल रिमेन कांस्टेंट. Why volume should remain constant? Because mass will remain constant, density will remain constant. Then volume has to change. Then volume remains same, the length has to change. We know volume equal to
L pi r square, it should be equal to L pi r by 2 whole square. So यहाँ पे L will become 4 capital L. इसका नया रेजिस्टेंस कितना है हम फाइंड आउट करेंगे. R डैश इक्वल टू रो L पाई R by 2 होल स्क्वायर. L का वैल्यू हुआ 4 कैपिटल L पाई R स्क्वायर, ये हुआ 4. Okay, this will become 16L. 16 रो L पाई R स्क्वायर. इसका टोटल वैल्यू हुआ अब नो 16R. Okay, fine. Sir, a volume remains constant is very important because मास रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे कितना मास है उसका मास वही रहेगा, और मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी विल नॉट चेंज. ओके फाइन. सो डेंसिटी कैंसिल हो, जो वॉल्यूम v इक्वल टू v डैश. सिंपल प्रॉब्लम. आपको इसको थोड़ा तो जस्ट आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई, वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो मैनेज कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. In the given figure, an emitter consists of 240 ohm coil connected in parallel to a 10 ohm shunt. The reading of emitter is 240 ohm coil. ये जो एमीटर है, लेकिन इसका एक्सपेंशन कर देंगे 140.4 ओम. इसका अप्लाइड ईएमएफ 20 वोल्ट. इसका रेजिस्टेंस गैलोमीटर है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कॉइल इज 240 ओम. और इसका यहाँ पे हम 10 ओम शंट रेजिस्टेंस, और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हुआ 240 ओम. द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रीडिंग पूछ रहे हैं. सो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. सो 240 ओम पैरेलल टू, सर लाइक व्हाट इज दिस वन. ये जो कॉइल, इसको कॉइल ही हम रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कॉइल, इसको हम सिंपल बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इन पैरेलल विद द शंट. शंट बोले तो लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हम शंट बोलते हैं. सो व्हाट डू मीन बाय शंट? लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. यहाँ पे गैलोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कॉइल, इन शॉर्ट वी आर कॉलिंग कॉइल रेजिस्टेंस. एंड लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल वी आर कॉलिंग शंट. आई थिंक सम ऑफ ये तो थियोरेटिकल, जब आप थ्योरी पढ़ते हो, these are the typical words. अगर ये याद रहे तो लिटिल बिट इजी है. इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ले लेंगे. रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे पहले. 240 इंटू 10 बाय 240 प्लस 10, 2400 बाय 250, 240 बाय 25. इसका 5 जा 240 बाय 25, 8.4 रेजिस्टेंस हुआ 8.4 ओम. टोटल करंट, इसका और एक सर्किट डाल देंगे. इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 8.4 ओम. यहाँ पे हम रीडिंग ऑफ करंट, ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, दिस विल बी दी रीडिंग ऑफ एमीटर.
ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, यही अमीटर का रीडिंग हो जाता है। इसी को हम अमीटर रीडिंग कहते हैं। So this should be equal to I is equal to 24 by अप्लाइड ईएमएफ कितना है? 24 वोल्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो दिस शुड बी 140.4 प्लस 8.4, 24 by 148.8। इसका वैल्यू हुआ 161 एम्पियर और 161 एम्पियर, मिली एम्पियर में पूछ रहे हैं। सो द ऑप्शन विल बी 161। अगला क्वेश्चन लेंगे। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू मीन बाय टर्मिनल? यहाँ पे इस ड्रॉप पूछ रहे हैं वो लोग। देन लगे ए जो 4 ओम, इसका इफेक्टिव कितना हुआ? 2 ओम। रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। समहाउ आपको थोड़ा सा सीरीज पैरेलल का आइडिया रहे तो, एंड सेल कॉन्सेप्ट, ये काफी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ 3 वोल्ट, इसका 1 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस है, एक बार देख लो। 4 ओम, 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। इसका इफेक्टिव कितना हुआ? 2 ओम। करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो प्लस माइनस। यहाँ पे केवीएल लगा दो। अगर आप यहाँ पे दौड़ रहे, समझ लो, अगर आप दौड़ रहे, जो टर्मिनल पे आप एंटर करते हैं वो एंड हो गया पॉजिटिव, जो टर्मिनल से आप निकल रहे बाहर रजिस्टर से वो हुआ नेगेटिव। यहाँ पे आप एंटर हो रहे पॉजिटिव, करंट यहाँ पे एंटर होता है पॉजिटिव, करंट यहाँ से निकल रहा है बाहर, सो नेगेटिव। लाइक दिस विल गिव द पोलैरिटी। ओके फाइन। सो यहाँ पे लूप इक्वेशन लगा दो, 3 + 3, यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं, तो देखो हम पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल तरफ मूव हो रहे हैं। सो ये दिस विल बी राइज इन ड्रॉप। सो राइज इन ड्रॉप के लिए -2i, सो फॉल इन ड्रॉप के लिए -2i, ए फॉल इन ड्रॉप के लिए -i इक्वल 0। आई इक्वल टू कितना हुआ? 1 एम्पियर। जो हमें पूछ रहा है ऐसा लगे दे आर आस्किंग द टर्मिनल पोटेंशियल। इसको हम ए एंड बी टर्मिनल्स बोलते हैं। एंड जो 3 वोल्ट है, दिस विल बिकम ईएमएफ, वीए विल बिकम टर्मिनल वोल्टेज। सो यहाँ पे हम सिंबल्स लगा देंगे। ई विल बिकम ईएमएफ ऑफ सेल, एंड ये जो वीए भी बोलते हैं ना, ए एंड बी, ये बैटरी का टर्मिनल्स बोलते हैं। और वीए भी है, दिस विल बिकम टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। सो दे आर आस्किंग वीए भी। सो हम क्या करेंगे, फिर यहां से केवीएल लिख देंगे ए टू बी। इसका वैल्यू हुआ +VA -3 +I -VB 0, I into 1 -VB 0। So VAB equal to 3 minus I, 3 minus 1, 2 वोल्ट। EMF अलग है, टर्मिनल वोल्टेज अलग है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गए तो देन द टर्मिनल वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू अप्लाइड EMF। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, देन टर्मिनल वोल्टेज, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहे तो देन करंट पास होता है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0।
ओके, सो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितना हुआ, वी ए बी इक्वल टू 2 वोल्ट। ये हुआ हमारा आंसर। वेरी सिंपल। अगर बैटरी, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल के बारे में पता है तो फिनिश, और यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Resistance of a wire at 0 degrees, 100 degrees, and T degrees is found to be 10, 10.2, 10.1. The temperature T in Kelvin scale. T degrees पर पहले हमें अल्फा के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो रेजिस्टेंस एट 0 degrees, रेजिस्टेंस एट 100 degrees is equal to resistance at 0 equal to 1 plus alpha. No, R not equal to 1 plus temperature will be 100 minus 0. This resistance at 100 degrees is 10.2. At 10 degrees, at 0 degrees, it is 10, 1 plus 100 alpha. So this will be 0.2, 1 plus 10 alpha. 10 alpha equal to 1 plus 1 minus 0.2. So 10 alpha will be 0.8. Alpha will be 0.08. Then at what temperature? Then at 10.95 ohm, R naught, this will be 10, 1 plus alpha, T minus 0 degrees. First we'll calculate T degrees, then we'll convert into Kelvin. So this will be 0.10.95 equal to 10 plus 10 alpha T. So 0.95 equal to 10 alpha T. So temperature will be temperature, this will be at T degrees Celsius. This will be 1000 alpha. 1000 alpha equal to 1 point. So this will be 1000. So this will be 18 to 10 to power of minus 4. 18 to 10 to power of minus 4. Then this will become 950 by 8. 950 by 8. 118.75 degrees Celsius. So in Kelvin, now let me check the other values. Compared to 0 degree, no, we are comparing this with 10.95 with 0 degrees Celsius. 10 alpha T, 0.95. 10 alpha is missing. Alpha, this will be 18 to 10 to the power of minus 3.
95 by 8. 95 divided by 8. 11.875. The temperature of this will be some calculations I'm missing. Just let me check out. Let me do all the calculation. 10.2, 10,000 alpha. 0.2 equal to 1000 alpha. Alpha will be 0.2. 2 into 10 to power of minus 4. Alpha will be known. This will be alpha 2 into 10 to power of minus 4. This will be 0.95. I don't know this will become 10 or 0.95 only. So 995 into 10 to power of minus 2 divided by 2 into 10 to power of minus 3. $450. So temperature in Kelvin will be 273 plus 450. There will be 3 plus 12, 13, 3, 1 carry, 733 Kelvin. The answer should be 733 Kelvin. To take the next question. A value of resistance is divided into 10 equal parts. Parallel and so on. Now resulting pairs of parallel commutator in series. The equivalent resistance of final combination is. Okay, यहाँ पे a wire of resistance 20 ohm is divided into 10 equal parts. Resulting pairs. A combination of two parts are connected in parallel and so on. Now resulting pairs of parallel combination are connected in series. The equivalent resistance of final combination is. Very good problem. Huh? यहाँ पे like we have resistance 20 ohm divided into 10 equal parts. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. इसका हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Each one is having 2 ohm. हर एक का यहाँ पे पार्ट का कितना कितना रेजिस्टेंस है इट विल 2 ओम इसका 2 ओम 2 ओम 2 ओम नीचे लिख चुका हूँ फिर भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ देन दो दो पार्ट लेके दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल
Now this will become 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? विल बिकम 5 ओम. इसका इफेक्टिव हर एक पार्ट का है, कितना है? 2 ओम है. फाइन. यहाँ पे हम कलर कर रहे हैं हर एक पार्ट का. नो, इस 2 ओम का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2 ओम पैरेलल टू 2 ओम विल बिकम 1 ओम. 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम. टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 5 ओम. दिस विल बी योर आंसर. यहाँ पे लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सबसे लाइक हिंदी में, या ओके फाइन, आप हिंदी में समझ लो, बट एग्जाम तो आपको इंग्लिश में ही रहते हैं ना. So you should get habituated both for Hindi as well as English. From Hindi you understand, but you should really improve your English, because क्या करते हैं आप लोग, like without this language idea not possible. तो बहुत सारे टीचर्स आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, ओके नथिंग रॉन्ग, अपने मातृभाषा में पढ़ना, एवरीथिंग इज फाइन, बट आप एग्जाम इंग्लिश में लिख रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. हिंदी में पढ़ो, हिंदी में समझो, और हिंदी में एग्जाम लिखो, फाइन, गुड, नो इश्यू था, सुपर. बट आप हिंदी में सुन के, हिंदी में समझ के इंग्लिश एग्जाम लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में क्या चाहिए आपको? बी गुड इन इंग्लिश ऑल्सो. सो डू गेट हैबिचुएटेड थोड़ा इंग्लिश के लिए, वर्ड्स का, व्हाट इज द मीनिंग, कैन, शुड बी, दिस वेरी एसेंशियल. सी एग्जाम इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड स्किल. आपके पास नॉलेज है, एग्जाम का स्किल नहीं, यू डोंट गेट रैंक, आपको रैंक नहीं आता है. तो आपको नॉलेज भी चाहिए, एग्जामिनेशन का स्किल भी चाहिए. आप हिंदी में सुन के, हिंदी में समझ के, हिंदी में पढ़ रहे हो, बट एग्जाम इंग्लिश में लिख रहे हो, देयर इज अ इशू. यू हैव टू improve your English. So reading and listening English is something very important. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The ratio of heat dissipate per second through the resistance 5 ohm and 10 ohm in the circuit. I think it's a, ये तो टोटल करंट डिवाइडर का हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड. हीट डिसिपेट मीन्स पावर डिसिपेटेड पूछ रहे हैं. देन ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? 5 ओम, 5 ओम, एंड इसका 10 ओम. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस विल बी, यहाँ पे 20 ओम हुआ, 10 ohm, 20 ohm. This will be 50 by 15. 50 by 15, 10 by 3 ohm. तो यहाँ पे करंट कितना हुआ? करंट का वैल्यू 10 बाय 20 प्लस 10 बाई 3, 30 बाय 70. सो करंट का वैल्यू कितना हुआ? 3/7 एम्पियर. तो ये 10/3, यहाँ पे करंट हो 3/7 एम्पियर. इसका करंट ले लेंगे I1, एंड दिस इज I2. I1 equal to I into 10 by 10 plus 5. 3/7 into 10 by 15. 2A3. 2/7 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. I is equal to I1 plus I2. I का वैल्यू कितना है? 3/7 है. A 2/7 है. I2. I2 is equal to 1/7 एम्पियर. पावर डिसिपेशन I1 square R1 by I2 square by R2.
I1 square 2 by 7 whole square R1 into 5 I2 square 1 by 7 whole square into 10. Okay, this will be 4, 2. Okay, this will be the ratio P1 by P2. Okay, fine. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A galvanometer of resistance 100 ohm when connected in series. A galvanometer of resistance 100 ohm when connected in series with 400 ohm measures a voltage up to 10 volt. The value of resistance required to convert galvanometer into ammeter to read up to 10 ampere. यहाँ पे हम एक galvanometer ले लेंगे. When connected say with 400 ohm, galvanometer resistance कितना है? 100 ohm. 10 volt. Measure say voltage up to 10 volt. So this 10 volt is equal to Ig into G plus Ig into R. 10 equal to Ig का वैल्यू पता नहीं. ओके फाइन. G का वैल्यू 100 प्लस 400. सो Ig का वैल्यू हुआ 10 by 500. So this will be 0.2. 0.2 into 1 by 10, 0.1 or 2 milliampere. 20 milliampere. It was 2 into 10 to the power of minus 2. 20 milliampere is the Ig का value. The value of resistance required to convert the galvanometer into ammeter to read up to 10 ampere. इसी galvanometer को हम क्या करते हैं कि इसको ammeter बना देते हैं. इसका शंट वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे I max is equal to A over Ig. I max Ig. शंट का वैल्यू पूछ रहे. सो आई मैक्स का वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर है. आईजी का वैल्यू हम पता है एस वैल्यू. तो ये दोनों पैरेलल है. गैलोमीटर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल है. तो इसके सो हम क्या लिखते हैं कि आई जी इंटू जी इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस. आई जी का वैल्यू 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3. जी का वैल्यू 100. आई मैक्स का वैल्यू 10. 20 into 10 to the power of minus 3. इसका शंट वैल्यू S. S equal to this will be 2. 10 minus 0.2.
10/9.8. Shunt का value, okay, 10, 20, 0.02. It's equal to 2 by 9.98. 2 into 10 to power of -2. इसका रेजिस्टेंस वैल्यू, शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है. दिस विल बी 1. ये तो हुआ 1, 2 यहाँ पे. IG का वैल्यू 20 मिली एम्पियर. 10 minus 20, 10 to power 0.02, 9.98, 2 by 9.8, 2 by 9, 2 divided by 9.98. इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लूँ मैं. 2 divided by 9.98, 0.2. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू is equal to 0.2004. इसका वैल्यू कितना करेंगे हम? 2.1, 0.2. So this will become 22 into 10 to power of -1. और इसका हम 20 into 10 to power of -2 ओम लिख सकते हैं. ओके फाइन. एक्स का वैल्यू, ये तो कंप्लीट थ्योरी हुआ. आप देख लीजिए. गैलोमीटर है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड गैलोमीटर इन पैरेलल. In an experiment to determine the galvanometer resistance by half displacement, the plot of 1 by theta versus the resistance R of the resistance box is shown in figure. The figure of merit of the galvanometer. एक galvanometer resistance directly theory of galvanometer अगर वो आपको याद रहे तो ओके फाइन गुड, अदरवाइज यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन. तो गैलोमीटर का है. तो अगर आप गैलोमीटर का theory याद रहे तो current is equal to K into theta, where K is called as the figure of merit. इस figure of merit हम K value find out करना है. और यहाँ पे हमें theta, the angular displacement of the pointer versus the resistance connected. R is the resistance of box shown in figure. तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे. So 2 by G plus R equal to K theta. Okay, fine. So 1 by theta equal to K. So 1 by theta equal to G by K by 2. R by K by 2. ओके फाइन. तो इसका स्लोप कितना है यहाँ पे? 1 by theta वर्सेस R एक ग्राफ दे चुके हैं. सो ये जो आपको दिख रहा है, सो दिस विल बी स्लोप. ये स्लोप यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे. जो येलो कलर का ट्रायंगल है, तो इसका स्लोप हुआ K by 2 इक्वल टू स्लोप. और इसका वैल्यू कितना है? स्लोप विल बी 1 minus 1 by 2 by 2 equal to 1 by 4. K का वैल्यू हो 1 by 2.
Or this will be 5 into 10 to power of minus 1 ampere per division. ये तो कंप्लीट theoretical है, कुछ भी नहीं. या तो the graph, from graph we'll get the value of k. बाकी ये सभी तो theory है. It takes half an hour to explain all these things. Just galvanometer, half deflection method, construction of galvanometer. Just read it. You have this particular formulas. These are the formulas. Next question ले लेंगे. In the figure, R1, R2, R3, R4 battery idle. Equivalent resistance circuit current supplied by the battery. इसका equivalent. ये जो ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल है. अगर आप करंट यहाँ पे भेज रहे हो, ये जो करंट आई, ये ब्रांच होके I2, I4 एंड I3. तो ये तीनों रेजिस्टर्स क्या है? ये तो पैरेलल है. So R2, R3, R4. इसका effective in series with this one. I is equal to 12 by R1, R1. इसका effective resistance calculate करेंगे. R2, 3, 4 equal to 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4, 1 by 8, 1 by 4, 1 by 8. 1 by 8, 1 by 8, ये तो हुआ 1 by 4. 1 by 4, 1 by 4 हुआ 1 by 2. तो R2, 3 वैल्यू का कितना हुआ? R2, 3, 4 का वैल्यू हुआ 2. वन एम्पियर. तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? बैटरी 1 एम्पियर. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पूछ रहे हैं. रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट तो 12 ओम है. आर इक्विवेलेंट तो R1 प्लस R2, 3, 4. ये तो हुआ 10 प्लस 2, 12 ओम. आंसर वेरी सिंपल. सीरीज पैरेलल. जस्ट सीरीज पैरेलल का अगर आपको आइडिया रहे तो दैट इज इनफ. आप मैनेज कर सकते हैं. अभी करीब करीब 12 क्वेश्चन है. सो इसको हम वीडियो स्प्लिट करेंगे पार्ट ए पार्ट बी बोलकर. अगला वीडियो में आप बाकी बचे सो 2024 अप्रैल शिफ्ट का अपलोड कर दूंगा. थैंक यू बच्चों. प्लीज रीड read theory, read formulas. You have to daily memorize. We have less time. Okay, we'll meet again in the next video. Till then, bye. Take care. All the best. Good morning, बच्चों. So we are going to discuss the current LCT JEE Main 2024 PYQ April shift part 2. Part 1 already कर चुके हैं. Part 2 बाकी बचे से around 12 or 13 questions. We'll discuss those things. Okay, let me finish off. Let me start them. Two wires in B are made up of same material and have same mass. Wire A has radius and wire B has the resistance of wire B, the resistance of wire A. दोनों का सेम मटेरियल, लेंथ अलग है, रेडियस भी अलग है, एंड मास एंड डेंसिटी सेम. टू वायर्स इन बी आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास. देन दोनों का वॉल्यूम तो एक ही रहेगा. रेडियस एक का 4 मिलीमीटर है, एक का 2 मिलीमीटर है. मास एंड एमटी. तो दोनों का कितना हुआ वॉल्यूम? L1 वॉल्यूम सेम because mass density equal to mass by volume.
density equal to mass by volume. So therefore V1 equal to V2. So pi R1 square L1 equal to pi R2 square L2. R1 square radius 2 millimeter, 2 milli whole square इसका L1. R2 square 4 millimeter, 4 millimeter square L2. L2 का वैल्यू L1 by 4. रेजिस्टेंस कितना हुआ R1 इक्वल टू रो, सेम मटेरियल, रो रो सेम रहेगा, L1 by R1 square. R2 equal to rho L2 by R2 square. So R2 is equal to R2, इसका रेशियो ले लेंगे, R2 by R1 is equal to will be L2 by L1, R1 by R2 whole square. L2 by L1 1 by 4, R1 by R2. R1 का रेडियस है 2 मिलीमीटर, इसका 4 मिलीमीटर, मिली मिली गेट कैंसल सर. आई थिंक सिंपल कैलकुलेशन, डेफिनेशन बेस्ड. ये तो हुआ 1/8 R2. R1 का रेजिस्टेंस कितना है 2. The resistance of wire है, the resistance of wire भी is 2 ohm. इसका 2 ohm है क्या, थोड़ा वायर एज रेजिस्टेंस यहाँ पे हम अलग ले चुका हूँ. वायर ए एज रेडियस 2 मिलीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी इज 2. वायर ए का रेजिस्टेंस कितना, रेडियस कितना है 2 है. L1 इक्वल टू 4L2, R1 by R2, R2 by R1 हम ले चुके हैं. So L2 by L1 R1 by R2 square. L2 का रेजिस्टेंस कितना है, L2 by L1, L2 by L1 is 1 by 4. R1 2 मिलीमीटर होल स्क्वायर एक बोल चुका हूँ, 1 by 2, 1 by 16 होगा, दिस विल बी 32. आई थिंक सिंपल डेफिनेशन. यहाँ पे मेरे को कुछ पढ़ाने के लिए भी ज्यादा कुछ भी नहीं. द बेसिक डेफिनेशन R इक्वल टू रो L by pi R square. वायर बोले तो sir, what is the shape? Wire will be in cylindrical only, not any other shape. This is very simple idea, you should remember. When we say wire, wire will be cylindrical. Fine. By default, you should assume that one. The only thing which you should be little bit alert. Next question ले लेंगे. Electric bulb rated 200, 200 or 50 watt. So power is equal to, maximum power equal to Vm square by R. 50 equal to 200 square by R. R equal to 4 into 10 to the power of 4 by 50. 4 into 10 to the power of 3 by 5. Four hundred into 10 to the power of 5, ये हुआ 800 ohm. The power dissipation of the bulb will be is equal to 100 watt supply अगर आप रखे तो this one. So this will be 100 square, 100 into 100 by 800.
100 by 8. 100 by 8, 50 by 4, 25 by 2. 12.5. Sorry. 12.5 watt. There's a power dissipated. Okay, sir. Like a दो पावर क्या है सर? Like a power dissipation एक maximum power. There's a maximum power. कितना maximum power? 50 watt. जब आप इस बल्ब को 200 वोल्ट वोल्टेज अगर अप्लाई करें तो पावर डिसिपेशन इन इट विल बी मैक्सिमम. इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. अगर आपको रेजिस्टेंस पता है और आप जितना वोल्टेज आप लगा रहे वो पता है तो देन यू विल गेट द पावर डिसिपेशन. कितना पावर डिसिपेशन कितना है? 12.5 watt. दिस इज लेस देन wattage power. So definitely what we get here, PD less than PM. So power dissipated will be definitely less than maximum power rating and the bulb is safer. अगर power dissipated greater than maximum power rating, then the bulb water will burn out or will get damaged. Simple ideas. Bulb series parallel एक बार रिवाइज कर लो. ये थोड़ा little bit you can say difficult question. वेरी रेयर इन जेई मेंस. एक रेजिस्टेंस के बारे में इतना थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा है बट इट्स मैनेजेबल. नॉट दैट वेरी टफ. लेस टाइम विल बी मैनेजेबल. तो यहाँ पे हर एक का साइड का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है. दिस ए क्यूब. ये जो 12 साइड्स है ना इसका हर एक का साइड का रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम है. बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड हियर between A and C. The voltage difference between E and F is asking. E and F यहाँ पे नीचे इसका E and F. यहाँ पे हम करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I. These two are similar branches and similar junction. यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I2. यहाँ पे आके करंट will get divided I2 by 2, I2 by 2, I2 by 2, I2 by 2. This will be I2. ये हो गया I1. ये हो गया I1. फाइन. नो. यहाँ पे हम ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है देन करंट I1. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2, I2 by 2, I2 by 2. ओके. ये हुआ. ओके इसका वैल्यू हुआ कितना? I1 एंड I1. तो करंट इस दोनों ब्रांच में एक करंट फ्लो नहीं हो रहा है. द रीजन फॉर दैट, B and D are at same potential. Similarly, E and G are at same potential. So इसके वजह से so what we can write, BE equal to VE, BD equal to VG. You can solve this by many methods.
सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं लाइक करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है? देयर वन वेरी सिंपल क्वेश्चन आप मेरे को पूछ सकते हैं, आई गिव ए सफिशिएंट प्रूफ। इसको हम प्लेन डायग्राम बना देंगे। हम जो यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग दिस इज ए, दिस इज सी। ओके फाइन। और ए हुआ बी, ए हुआ डी, बी ई, ए हुआ जी, एफ जी एच, या फाइन। करंट इन इन ब्रांचेस में करंट नहीं फ्लो होगा, फ्लो नहीं होता है। और हम जो सेल कनेक्ट कर रहे हैं, सो वो सेल यहाँ आता है, ए टू सी। फाइन। तो अब तो लेट इट इजी एवरीवन। थोड़ा बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ? तो यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, इट ब्रांच आउट आई वन एंड आई वन। यहाँ पे आई टू करंट, ए ब्रांच होगा आई टू बाई टू, आई टू बाई टू, फिर आई टू बाई टू, आई टू बाई टू, आई टू, आई वन, आई वन, दिस इज आई। ओके दिस इज करंट। ओके फाइन। हाँ, इससे मेरे मेरे पास इससे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली इस डायग्राम में वेरी डिफिकल्ट जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब लिख रहा हूँ वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे आपको वेरी इजीली गेट इट। potential at B and E are same, potential at all these are equipotential directly, potential at B equal to E equal to G equal to D। the voltage difference between E and F पूछ रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे हम। अगर आप ये रेजिस्टेंस रिमूव कर दिया तो ये यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके नो, एडजस्ट कर लेंगे। नो, let me explain this in detail. So this condition is very important। हम जो अब सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस आइडिया। सर आप कैसे लिख सकते,
if you draw an perpendicular line about which what happened, the current is distributed symmetrically, then all the points which lie on this bisector perpendicular line, they'll be at same potential. There's a one basic condition. Then we can remove this. Okay, then find out the equivalent current very easily. The voltage difference between this, जो भी यहाँ पे हम 6 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम एंड 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम 2 ओम. I think now we can manage with simple series parallel. इसका total 6 volt 4 ohm इसका रेजिस्टेंस कितना 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm. ये कितना हुआ 2 ohm 2 ohm 4 ohm 4 ohm and this 4 ohm 2 ohm और total इसका total हुआ 6 ohm. इसका total हुआ 4 ohm. So कितना ड्रॉप कितना है, so 6 ohm. ये जो 6 ohm ड्रॉप है, ये 6 ohm कैसे बना बोले तो इसका 4 ohm. ये येलो कलर भी डाल देता हूँ तुम्हें, इजी होगा. ये जो ग्रीन कलर का है, दिस विल बी 2 ohm 2 ohm and 2 ohm. यहाँ का this is 2 ohm. ये वाला 2 plus 2 4 and this is 4 parallel, this will be 2 and this will be 2, so 2 2 2. Then so इसका 6 वोल्ट आप यहाँ पे डाल रहे हैं, so कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट. so यहाँ पे ड्रॉप कितना है 2 वोल्ट है, कितना ड्रॉप यहाँ पे जाएगा 1 वोल्ट. so what is the potential EF will be 1 volt. Fine. There's a basic idea. It's lengthier. Definitely, it's lengthier in term. One very rare you'll get a question like this. And sir, ऐसे tough question आते बोलकर सभी ऐसे tough questions practice करना very dangerous. It's a very rare, like 1% chances. Very rare. To measure the international of battery potentiometer. Potentiometer out of syllabus. I'll remove it. Not needed. Water boils in an electric kettle in 20 minutes after being switched on. Using the same main supply, the length of heating element should be times of its initial length if the water is to be boiled in 50 minutes. Increase to, decrease to, बाद में पूछ रहे हैं. Something electric kettle, इसका एक length है. We applied some voltage, potential drop. इसका radius भी हुआ. 20 minutes after being switched on, using the same main supply, the length of heating element should be signal if the water to be boiled in 15 minutes में इसको boil on same voltage supply. So इसका resistance heat water H is equal to delta T equal to V square by R. Delta T1. The amount of heat has to be same.
So इसका h by delta T2 equal to v square by R2. If water to be boiled in 15 minutes. So जिसका उसको जो heat, the amount of heat चाहिए वो तो that will remain same because from calorimetry Q equal to ms delta T. जितना heat चाहिए वो तो same है. Fine. So अगर आप time change करें, the resistance changes, the time will change. So therefore now this will become delta T1 by R1 should be equal to delta T2 by R2. 20 minutes. 20 minutes by resistance R1 delta T2 15 by R2. R1 by R2 equal to 4 by 3. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू L1 रो L1 by A रो L2 by A R1 by R2 L1 by L2 4 by 3 equal to L1 by L2. L2 का लेंथ कितना हुआ L2 इक्वल टू L2 का लेंथ कितना हुआ will be 3L1 by 4. और ये तो डिक्रीज हुआ ना. There's one basic idea of the electric kettle. This has to be same. जो amount of heat चाहिए वो तो same है. The amount of heat supplied per unit time will become power. That power is supplied by the electrical resistance. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. और एक क्वेश्चन है हीटर के बारे में. It is designed to operate power of 1000 watt. यहाँ पे हीटर कॉइल है. There is a heater coil. 100 volt line. This 100 volt line. It is connected in combination with a resistance of 10 ohm and the resistance to under root means as shown. For the heater to operate at 62.5 watt, the value of R. इसका value of R कितना? 62.5 watt. So power dissipation, यहाँ पे power dissipation कितना है हीटर का? Power dissipation है 62.5 watt. इसका resistance of heater find out करेंगे. That information designed to operate with power of 1200 watt. Okay sir, यहाँ पे दोनों पावर है. यहाँ पे एक 1000 watt. It is designed to operate with power of 1000 watt. यहाँ पे आप अगेन आप यहाँ पे क्वेश्चन पे दोबारा for the heater to operate 62.5 watt. सर ये दोनों का मतलब दिस is a maximum power. अगर power dissipation across heater, this is a power rating. अगर power dissipation across heater is greater than this, ये जो हीटर है it जल जाएगा. It will get burn out. It will get damage. ये खराब हो जाएगा. Then so what will happen is what will be the value of R? ये value of R हम कितना adjust कर सकते हैं so that कितना power dissipate हो रहा है 62.5, but maximum कितना हो सकता है 100 watt, 1000 watt. Then sir, what is this 100 watt line? So इसी हीटर कॉइल इसका एक रेजिस्टेंस रहता है RH. अगर हम 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो अक्रॉस इट, देन इसका पावर मैक्सिमम पावर कितना जनरेट होगा 1000 watt. दिस इज मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड. दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज. इससे हम वोल्टेज एक फाइंड आउट करेंगे Vm स्क्वायर बाय RH. पावर डिसिपेटेड हाउ मच 1000 100 स्क्वायर RH.
सो आर एच का वैल्यू कितना हुआ? 10 ओम यहाँ पे। रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल, इसका 10 ओम, आर का वैल्यू ये। सो यहाँ पे बाकी बचे 100 वोल्ट। ये भी 10 ओम। सो नो पावर डिसिपेशन यहाँ पे कितना? 62.5 watt। मैं कैलकुलेट द ड्रॉप हियर, इसका ड्रॉप कितना कितना रहना चाहिए? सो 62.5 equal to, little bit lengthy, this also very lengthy, this also lengthy. Power dissipated equal to potential drop developed across the heater coil by resistance. Resistance of heater is how much? 10 ohm. So 62.5 V naught square RH will be 10. V naught square equal to 625. V naught equal to 625 volt. कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर चुके हैं? 25 वोल्ट। और तो 100 वोल्ट, इसमें से 25 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे है। कितना ड्रॉप यहाँ पे? 75 वोल्ट। देन रेजिस्टेंस कितना हुआ इसका? आई। सो वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू हाउ मच? 75/10, 7.5 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। I1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I1 का वैल्यू विल बी B0/10, 25/10, 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5 एम्पियर। इसका वैल्यू ऑफ आर पूछ रहे हैं। सर आप यहाँ पे 5 एम्पियर कैसे लिख रहे? सो लेट दिस बी I2। यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे हम। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I का वैल्यू कितना? 7.5 एम्पियर। I1, I2। I1 इक्वल टू 2.5, ये हुआ I2। I2 का वैल्यू हुआ कितना? 5 एम्पियर। देन R इक्वल टू V नॉट स्क्वायर, ओके दिस वन, पावर डिसिपेशन, ओम्स लॉ। V नॉट इक्वल टू I2 इंटू R। V नॉट का वैल्यू कितना है? V नॉट 25। I2 का वैल्यू कितना? 5। R इक्वल टू 5 ओम। हाँ, लिटिल बिट लेंदी, थोड़ा थोड़ा सीरीज पैरेलल, नथिंग बट पावर रेटिंग एंड सीरीज पैरेलल। अगर आपको ये दोनों थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे तो आप इसको इजी से कर सकते हो। पावर रेटिंग का, पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर रेटिंग, पावर डिसिपेशन, देन बाकी सभी सीरीज पैरेलल। सर विल दे आस्क, सो लाइक जनवरी 2024 में ले लो, ये 2 3 4 क्वेश्चन ही टफ है। कितना टोटल? कितना? 24 + 22, 48 क्वेश्चन थे। 48 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही टफ है, बाकी बचे 44 क्वेश्चन देर वेरी इजी। 2000 complete 2024। Still the basic idea is same, huh? Now again galvanometer. A galvanometer coil of resistance 200 with a full scale deflection of 20 microampere. तो galvanometer, ये वो हमारा galvanometer, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम। इसको एमीटर करने के लिए
The value of resistance to be added to you use it as an ammeter 0 to 20 milliampere. यहाँ पे कितना मैक्सिमम करंट 20 milliampere फ्लो हो रहा है. इसका वैल्यू ऑफ एस कितना है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे आई जी का वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर. बाकी बचे सो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. प्लस माइनस इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस. तो आई जी का वैल्यू 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 गैलोमीटर रेजिस्टेंस 200 20 मिली एम्पियर 20 माइक्रो एम्पियर. ए मिली एम्पियर है मैक्सिमम रेंज. 20 इंटू 10 to power of -3 Ig equal to shunt value. सॉल्व करेंगे. सो इट विल बी 0.2 ओम. तो 10 to power of -3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 10 to power of -6 10 to power of -3 better will get cancelled. We'll get around 0.2 ohm. Very small resistance. Solving this simple formula once again. अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो ये डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली थ्रू फॉर्मूला कैन मैनेज. अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता एटलीस्ट बेसिक का ए वो गैलोमीटर. अगर आप इसको एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो एक गैलोमीटर हो जाएगा एमीटर. तो एमीटर बोले तो दिस एवरीथिंग इज एमीटर. गैलोमीटर इन पैरेलल विद शंट एंड एमीटर रेजिस्टेंस कितना है? जी एस बाय जी प्लस एस. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? जी प्लस आर एस. हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसी को हम शंट बोलते हैं. वंस अगेन एक एमीटर वोल्टमीटर रिवाइज कर लो. कॉन्सेप्ट विल बी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे कनेक्शन नहीं है. दिस सिंबल यहाँ पे अगर ऐसे दिए तो दिस इज नॉट कनेक्टेड. ओके फाइन. यहाँ पे हम थोड़ा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ले लेंगे. P1 P2 P3 P4. they are connected by wire. One line connected and ये वाला यहाँ पे कनेक्टेड है. रीड्रॉ कर लेंगे. तो ये हुआ ए बी P1 P3 P4 हुआ एंड ए P4 P1 P2. From A to P1 there is a 6 ohm resistance. P1 to P4 15 ohm. फिर P4 to P4 तक 8 ohm. यहाँ पे 10 ohm 5 ohm 8 ohm और A was 7 ohm. B से P3 तक 8 ohm है. कितने कितने रेजिस्टेंस हुए टोटल काउंट करेंगे. 1 2
3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितना 6 हो। अब अभी 2 लाना है बाकी। कौन से रेजिस्टर्स मिस हुए यहाँ पे? फ्रॉम ए टू P1, P1 टू P4, P1 टू P4 10 5 है यहाँ पे। P1 टू P2, P1 टू P4 10 5 है। P4 टू P2 और P3 टू P2 4 एंड 11 है। वो भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। P3 टू P2, P3 P2, P2 से 11 11 11 11 हो और ए वाला 4 हो। सिंप्लीफाई करो ना। ए जो ग्रीन कलर का है P3 P4 यहाँ पे लगा रहा हूँ। P1 P2 common. So what is the basic idea? Equipotential points. Whenever two lines in a circuit, when 2 points are joined by a wire, they'll be at same potential. Make them common. And there's a concept of equipotential. Why, sir? We are removing those wires. I'm not removing. If two wires are connected by a if 2 points in a circuit connected by conducting wire, account electrostatic conductor is equipotential, so therefore the potential of P1 P2 should be same. उसको common point बना दो। Similarly P3 P4 एक conducting wire है। What is the symbol, sir? ये तो jump का symbol है। तो potential P3 P4 will be same, so make them common। और बाकी सर्क्यूट रीड्रॉ कर दो और यहाँ पे काउंट कर दो कितना रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको रीड्रॉ करना है। सो दिस इज ए P1, then this is 8 ohm. इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 15 ohm, 15 ohm, 15 ohm. This will be 5 ohm. इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? Will be 8, 15 ohm, 15 ohm, 15 ohm, 5 ohm, 8 ohm, 19 ohm. Total RAB equal to 19 ohm. Last वाला questions. The current flowing through 1 ohm resistance. 1 ohm कहाँ पे है? 1 ohm यहाँ पे। कितना करंट फ्लो रहा है? नो इज पूछिंग, इज आस्किंग। क्या व्हाट इज द मेथड? 5 वोल्ट यहाँ पे सेल है। एंड वन मोर थिंग, यू कैन यूज सम थोड़ा सर्क्यूट ड्रॉ करेंगे ना, लिटिल बिट थोड़ा बड़ा बड़ा डायग्राम चाहिए। इस तरह ले लेंगे। We'll see what are the different methods available. यहाँ पे रेजिस्टर्स नो, इसका वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है। ये वाला 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम। विस्टोन नेटवर्क यहाँ पे हम नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे गैलोमीटर रहे तो ओके फाइन, कुछ कर सकते थे हम। यहाँ पे गैलोमीटर नहीं, ये तो सेल है, सो सेल को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके फाइन। नेक्स्ट
सर ओके देन आप क्या करने वाले हैं? तो पहले इट्स वेरी सिंपल। अगर रियली रियली इफ यू आर लूप करेंट I2 I3 और बाद में पोलैरिटी दे दो। व्हाट आर द पोलैरिटीज? पोलैरिटीज विल बी यहाँ पे करंट एंटरिंग लिविंग, करंट एंटरिंग लिविंग, यहाँ पे करंट एंटरिंग एंड 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 लिविंग। Write all the loop equations, three equations, they are known, solve it. Sir, lengthy. No other choice. अगर आपके पास टाइम रहे तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपके पास टाइम रहे तो देन कम आउट फिनिश और देयर नो अदर चॉइस। तो लूप इक्वेशन लिख रहा हूँ। 10 माइनस 4I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I1 माइनस I3 0। ये वाला। देन बाद में ये वाला लूप इक्वेशन। ये जो लूप इक्वेशन हम लिखे थे दिस द पाथ। अब इसका लूप इक्वेशन लिख देंगे। अगेन 10 प्लस 10 माइनस 4I3 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस I3 माइनस I1 0। ओके फाइन। इसका हुआ यहाँ पे प्लस 5 ए लूप में लिख देंगे। 5 माइनस 2I2 माइनस 2I1 माइनस 2I2 I3 इक्वल 0। ए वाला लूप इक्वेशन दिस वन आई एम राइटिंग इट। ओके फाइन। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ लूप इक्वेशन लिख रहे हैं। येलो वाला पाथ उसके लिए ए लूप इक्वेशन है। और ये जो ब्लू कलर का पाथ है दिस इज फॉर दिस लूप। तीनों इक्वेशन से सॉल्व कर दो और द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 1 ohm रेजिस्टेंस इज कितना? I1 एंड I3 रिजल्टेंट ऑफ दिस टू। दिस अ लूप मेथड। दिस अ बेसिक लूप मेथड। सर और कौन सा एनी मेथड है? ओके देन दूसरा नोडल एनालिसिस। यूजिंग नोडल एनालिसिस हम क्या करते हैं बोले तो यहाँ पे वोल्टेजेस डिफाइन कर लेंगे। 5 वोल्ट, इसका तो हुआ 0 वोल्ट। देन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता नहीं। एक्स मसला कि इसको सी बोल दीजिए और ए। देन राइट इक्वेशन। यहाँ पे नोडल इक्वेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं सी माइनस 5/2 प्लस सी माइनस 0/2 सी प्लस 10 सी प्लस 10 माइनस A/1 इक्वल टू 0। A माइनस 5/4 A माइनस 10 माइनस C/1 A माइनस 0/4। कितने अननोन्स है? ए एंड सी। अगर आपको ए एंड सी पता रहे तो देन यू कैन इजीली टेल व्हाट इज दिस करेक्ट।
सर आप ये सब कहाँ से लिख रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग? हमें यहाँ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 5 5 एंड 0 एज्यूम कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल हमें पता नहीं, यहाँ पे सी एंड ए हम एज्यूम कर रहे हैं, देन आई एम राइटिंग द सेम केवीएल ओनली। यहाँ पे हम केवीएल ही अप्लाई कर रहे हैं। So the net current entering the junction, the net current entering the junction at C should be equal to net current leaving the junction. हमें पता नहीं कौन सा current enter हो रहा है या leave हो रहा है, तो इसलिए what we are doing is like nodal analysis. We are defining the nodal potentials. This will call node. C minus 5 by 2. This will be the current here. C minus 0 by 2. This will be current in this branch. C plus 10 minus A by 1 ohm. This will be the current. यहाँ पे कौन सा करंट एंटर हो रहा है, कौन सा लीव हो रहा है पता नहीं, बट algebraic sum of all currents is equal to 0. This is algebraic sum. Similarly, A minus 5 by 4, A minus 10 minus C by 1, A minus 0 by 4. इसमें से कौन सा करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है और कौन सा करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है और कौन सा लीव हो रहा है हमें पता नहीं. So this is the algebraic sum. The algebraic sum currents at a point equal to 0. यहाँ पे कितने अननोन्स है आपको? ए एंड सी, टू इक्वेशंस, टू अननोन सॉल्विंग, आपको पोटेंशियल एट ए एंड सी मिलेगा. वंस आपको पोटेंशियल मिलने के बाद इक्वेशन लिख दो, ए माइनस 10 माइनस 1 इंटू आई, पता नहीं, वी आर मूविंग फ्रॉम आई टू लोअर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल. यहाँ पे मैं माइनस आई लिख रहा हूँ, सो आई एम एज्यूमिंग दैट current will flow towards right, minus C equal to 0. Substitute A and C. If you get I positive, what you assumed is right. If you get I negative, change the direction. But he's asking only magnitude. Really very lengthy problem, not tough, lengthy problem. Nodal analysis, loop current method. But sir, nodal analysis तो JEE means के लिए very rare is asking loop current method. अगर आपको nodal analysis याद रहे तो use this one. Are you getting? So again, don't prepare nodal analysis. अगर आपको लूप करंट मेथड अगर याद रहे तो यूज दिस वन, एंड अगर आपका टीचर नोडल पढ़ाए तो देन गो फॉर दिस, अदरवाइज लिव इट. दिस लूप करंट मेथड इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. लास्ट क्वेश्चन, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज आर. ये तो सीधा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं. यहाँ पे कुछ कुछ तो सिमेट्री, सिमेट्री नहीं तो सीरीज पैरेलल के, वी शुड टेक हेल्प ऑफ दैट वन. एनी मेथड? सर इतना बड़ा सर्क्यूट एग्जाम में पूछ सकते? इट्स पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट समथिंग वेरी टफ, नॉट वेरी टफ. करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट ये यहाँ पे ब्रांच हो जाता है. ओके फाइन. तो एक करंट यहाँ पे ऐसे गुजरता है और दूसरा वही करंट, उसका उसका वैल्यू, वही वैल्यू करंट यहाँ से गुजरता है और दूसरा करंट यहाँ से बिना ब्रांच के गुजरता है और दोनों कम, तीनों मिलके अगेन इट विल बिकम सेम करंट. इस ब्रांच में नो करंट, देयर नो करंट इन दिस ब्रांच. सर हाउ इट इज पॉसिबल? ये हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. आई दिस I1, ये हुआ I1, ये हुआ I2, सॉरी I1, एंड ये वाला हुआ I2 एंड I2, एंड ये हुआ I. तो नो रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच, नो करंट इन दिस ब्रांच, इसको निकाल देंगे हम.
तो ये वो 2 2R 2R 2R. That effective is again with the in parallel. So 2R parallel will simplify करेंगे. So this one will be 2R 2R 2R, and this is R. So 2R by 3. So this will be 2R by 3 R and AR. So total R naught or R equivalent will be R plus 2R by 3, 8R by 3. So once again, so like what are the key important things? Ammeter, voltmeter, galvanometer, Wheatstone network, meter bridge, resistor in series and parallel, power dissipation means bulbs, ratings, ether coil, temperature quotient of resistance alpha. जो भी पूछ रहा है, this is the major area of asking. So some problems यहाँ पे last 3-4 problem मैं जो कर चुका हूँ, this is on and average like 27 or 22. 49 प्रॉब्लम में 4 ही टफ है, बाकी सब वेरी वेरी सिंपल है. और जो 4 प्रॉब्लम जो पूछ चुके, सो दे आर बेस्ड ऑन सम रेजिस्टेंस नेटवर्क. लाइक बहुत सारे रेजिस्टेंस देखे, उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. सो रियली लुक एट द परसेंटेज. ओनली आपको कितना मिलेगा परसेंटेज? ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 10%. नो मैक्सिमम व्हाट हैपन, दिस इज द बेट यू कैन डू इट. So these are the threshold areas: ammeter, voltmeter, galvanometer, Wheatstone network, meter bridge, resistor series parallel, power rating, bulbs, ether coils, temperature quotient of resistor. Series parallel is very very important. हर जगह में KVL, KCL, these are universal. So prepare well. You have very less time now. If you are choosing current intensity, revise this first, theory, concepts, everything. बाद में आप formula याद कर लो. Then you can manage exam very easily. All the best students. Do well. तो नेगला कौन सा तो एक नया चैप्टर PY को कर लेंगे. Thank you all of you. Thanks for great support.